profit, this is my investment. इतना इन्वेस्ट किया हूं, मेरा प्रॉफिट इतना हो जाता है, ठीक है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। पता नहीं, आदर्श आप म्यूट करिए, आदर्श आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। My investment is 1 lakh and my profit is 40,000. 40,000 is my profit. Suppose you invest 70,000 as your investment and 40,000 is your profit. दोनों same business करना, both are doing same business. बताइए, who is doing the better business? My investment is 1 lakh. 70,000, दोनों का प्रॉफिट है 40,000. Who is doing the better business? कौन अच्छा बिजनेस कर रहा है? किसका बिजनेस अच्छा है? The second one, you are doing the better business. The reason क्या है? What is the reason? What is the reason? तमन्ना, के लिए reason क्या है? Less investment and same profit. Investment मेरा 70,000, 1 लाख है, लेकिन आपका है 40,000. So less investment, same profit दोनों होता है. अच्छा, टाइम पे इसलिए ज्वाइन करना श्रेया. We have started the bills of exchange. It is already written on the top. हाँ, okay, right. तो कैसे ये आप हुआ है 17,000 पे आप 40,000 कैसे ही कर रहे हैं? तो started checking. फिर बाद में पता चला है, when I'm asking, क्रेडिट सेल्स तो आप भी रुक नहीं सकता है, क्रेडिट सेल्स को कम करने से आपका सेल्स कम हो जाएगा, सारे आपको कैश, कोई भी कैश नहीं देता है, तो काफी टाइम डेटा, तो डेटा से वैसे भी आप टाइम ज्यादा भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आप भी उधार लेके तो बिजनेस करता है. यू आर आस्किंग द पर्सन जिसको आपने सेल किया है, यू आर आस्किंग हिम व्हेन विल यू गिव बैक द मनी. मैं 10 लाख इन्वेस्ट किया, 10 लाख का तो सेल्स होता है, क्रेडिट सेल्स. आई एम आस्किंग कब आप वापस देंगे पैसा? 5 minutes not all right, just switch your phone, reconnect it, so you will be getting. Okay, am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Am I audible? Yes. ठीक है, नीतीश आपका कनेक्शन को आप चेक कर लीजिए. ओके, थैंक यू आदर्श. ओके ओके, right. So 10 lakhs I'm sending to someone. 10 lakhs is my sales. He is going to pay me 1 साल 2 साल के बाद, then that is not right way of doing the business. मुझे इनसे पैसे जल्दी लेना है, टाइम पे लेना है, without disturbing my business. मैं जाके तो उनसे पूछेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे पास नहीं आएगा. Next time he will not come to me for the sales. So what will I be doing? I'll be asking him, भैया कब pay me back? 10 लाख का मैं सेल किया हूँ, and I'm asking the person, when are you going to देंगे? खाते देने के बाद देंगे फंड्स. ठीक है, मैं एक पर्ची बनाता हूँ. I so and so accept to pay this much money, 10 lakh by or before
3 months डेट हो जाके ये कर दिया। एक फोन करता है पैसा मुझे चाहिए, मैं मिस्टर एक्स को सेल कर रहा हूँ, पैसा मुझे चाहिए, आई नीड द मनी, सो आई एम मेकिंग दिस लेटर और डॉक्यूमेंट that is going to क्रोम पे करोगे, ऐप पे करोगे, ऐप डाउनलोडेड है पहले। is talking I don't know. Shut up, right. So I make this document. I'm asking the person to whom I have sold. तो अब पैसा देंगे, सही इस पैसा 3 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है 3 महीने के बाद देगा। मैं एक लेटर बना देगा, ये मिस्टर एक्स एक्सेप्टेड, आई मिस्टर एक्स एक्सेप्ट टू पे टू मिस्टर श्रीनिवासन रुपीज 10 lakhs फॉर द सेल्स विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सिग्नेचर। तो करके मैं एक्स को देगा, एक्स साइन करके मेरे पास वापस देगा। सर ये कागज से क्या फायदा है? What is the benefit of this document? I can take it to my banker. तो मैं बोल सकता हूँ, see banker, Mr. X is going to pay 10 lakhs rupees in 3 months time. मुझे पैसा दे दो। The bank will give me the money by taking the document. 10 लाख नहीं देगा, तो उनका कमीशन काट के बाकी पैसा देगा। Okay, right, it is all right. I'm getting 9,90,000. तो 3 महीने पे this 9,90,000 I can make it to 40 lakhs. क्योंकि ये पैसे के मैं रोटेट करते I can make the sales of 25 or 40 lakhs rupees. So मुझे रोटेट करने के लिए पैसा मिल जाता है। So that is this bill is Sir, your voice not clear. You are not audible. now it is all right. Now audible. Yes, sir. Yes, Okay, yes. okay, okay. Right. अपने आप म्यूट हो जाता है, पता नहीं कैसे। और इट्स ओन गेट म्यूटेड। चलिए राइट। So I'll go and give this document to the bank saying that भैया देखो, मुझे मिस्टर एक्स ने वादा किया है 10 लाख रुपए पे करेगा 3 महीने के पहले, आज मुझे पैसा दे दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, एक्स एक्स पे करेगा, आपको हम पैसा देंगे। कितना देगा? पूरा नहीं देगा, 10 लाख नहीं देगा। उनका 3 महीने का कमीशन काट के बाकी 9,90,000 is paid back. तो ये 9,90,000 in 3 months time I can rotate, keep on rotating, तो मैं तो 40 लाख का सेल्स कर दूंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा। अगर ये 10 लाख 3 महीने के बाद मिल रहा है तो क्या हो जाता है, हैव टू वेट, ठीक है एक्स देने दो, फिर बाद में मैं जाके खरीदूंगा, बाद में जाके प्रोड्यूस करूंगा, फिर सेल करूंगा। ऐसे बिजनेस में नहीं हो सकता, नहीं तो उधार लेके पैसा डालना पड़ता है। So to avoid all these things, to have the enough working capital, you use the bills of exchange as an instrument, financial instrument. कौन रेस करता है इसको? कौन प्रिपेयर करता है? जो सेल किया है उन्होंने प्रिपेयर करता है। द पर्सन हु सेल्स द आइटम प्रिपेयर्स दिस डॉक्यूमेंट, रेज दिस डॉक्यूमेंट। सो जो सेलर है ही इज नोन एज ड्रॉयर। ड्रॉयर इज द पर्सन हु सपोज टू गेट द मनी, एंड ड्राई इज द पर्सन कौन पैसा पे करना है, इज द ड्राई। ड्रॉयर इज द पर्सन हु सपोज टू गेट द मनी, एंड ड्राई इज द पर्सन हु सपोज टू पे द मनी, right? Then the next term is holder of the bill. Who is the holder of the bill? On the date of maturity, on the date of maturity, जिसका पास है, जिसका पास है instrument, he is the holder or payee. He is the holder or
payee. Payee or holder, we can say. Payee is the person who gets the money, who receives the money finally from the drawee. Drawer is the person who sell करता है. Drawee is the person who purchase करता है. अपना परचेज के लिए तो ड्रायर को पैसा पे करना पड़ेगा. He has to pay the money to the drawer. And the payee is the person who receives the money. Who receives the money? Who receives the money on the date of maturity? He is the payee. Endorsee कौन होता है? Endorsee is the person to whom the bill is endorsed. To whom the bill is endorsed. तो आप देख सकते हैं, you are going to some shop, जैसे कहीं प्रोविजन शॉप आप जा रहा है तो समथिंग आधा लीटर 1 लीटर दूध लेता है. क्या आधा लीटर दूध लेता है? आधा लीटर दूध 28 रुपीज करके वो दुकानदार बोल रहा है. So 28 rupees है half a liter of milk. So you are paying 30 rupees. 30 rupees to the person in the जो दूध बेचने वाला है, you pay him milk vendor 30 rupees. कितना वापस आपको मिलना है? 28 rupees is the cost. 30 rupees you are giving. 2 rupees you have to sorry 2 rupees you have to get back from him. तो दूध वाला बता रहा है, भाई साहब मेरे पास 2 रुपया का नहीं है, एक पर्ची पकड़ो. He makes a receipt and give you 2 rupees करके ऐसे लिखी. आप कभी भी आके दे दो सर, मेरे पास जब चेंज होगा मैं दे देता, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आई विल एडजस्ट दिस मनी. You give back this पर्ची to me. So what I am doing, I am going to next to a vegetable vendor. I am purchasing something. The cost is coming 12 rupees. I am giving 10 rupees on the पर्ची to the vegetable vendor. भैया आप ये मिल्क वाला से 2 रुपया ले लो करके वो पर्ची उनको पकड़ा दी. So this way you can do the bills also, bills of exchange also. Either you can collect the money or you can give this to your creditor to collect the money from the drawer. Okay. So the person to whom it is assigned, that person we call it as endorsee. Endorsee is nothing but it is a creditor for you. Endorsee is creditor. So you have to get the money from your drawee. Drawee is creditor for you. Similarly, you have the creditor. So whatever the bill you have received from the drawee, you can give to your creditor. The person to whom you are endorsing is known as endorsee. So these are the 3 terms हम सबसे पहले हम समझ लें. ठीक है, drawer, drawee, payee and endorsee. Okay. Maturity. The period of bill plus 3 days is the maturity date. Period of bill plus 3 days is the maturity date. So period of bill plus 3 days. Suppose let's say bills based on 1/1/2020 for 4 months. Bills raised on first 1/1/20 for 4 months. Maturity date क्या होगा? Bill period plus 3 days. 4th day वो maturity हो जाएगा. Bill period plus 3 days. तो bill period क्या है? 1/1/2020. So Jan, February, March, bill for 4 महीने, April. 4 महीने ये हो गया प्लस 3 days. 3 days क्या आएगा? 3 days 15
second में, third में, so your date of maturity will be 4/5/2020. Bill is for 4 months, not 3 months. Nitish, bill is for 4 months, not for 3 months. Right. So number of period, actual period plus 3 days is the maturity date. The fourth day will be the date of maturity. See here, another one. Bill raised on 14/1/2020 for 3 months. Calculate date of maturity. कौन मुझे बता सकता है इसका? कैलकुलेट कर दीजिए फटाफट. Bill is raised on 13/1/2020 and 3 months, for 3 months. Date of maturity क्या है? What is the date of maturity? Which date? Jaldi. Who is going to tell me? 16th April, Rajesh. Any other answer? Any other answer? श्रेया भी 16th बता रही है. Any other answer? Tamanna भी 16th April. ठीक है, right. So here, first month. First month होगा 13/1/12. This is first month. Second month होगा 13/2/12. Third month होगा 13/3/12/4. फिर बाद में 3 days. कौन सा दिन है? 13th April, 14th April and 15th April. 3 days, grace days. Grace days 3 दिन. Okay. So 16th April, so 16th April 2020 is the maturity. Any doubt in this? Any doubt? It is not 14th April, it is 16th April. So how this is coming? I have written here. So 13th to 12th, 13th to 12/3, and 13/3 to 12/4. So 13, 14, 15, 3 दिन हो गया है, and the fourth day is the maturity date. So this is when number of months जब दिया है, this is the way we have to calculate. कीर्ति अभी आप बताएंगे. Only Kirti will tell me now. Date of bill 16/5/2020. 4 months. Maturity date. Yes, Kirti बताइए. अभी बताइए क्या है? जल्दी. Anybody else calculated? Yes, Nitin, 19th August. Kirti, what is the date? Vandana, 19th September. 19th September. 19th October. Oh my goodness. Okay, मैं calculate कर देता हूँ. The first month होगा 16/5 to 15/6 first month, then 16/6 to 15/7 second month, 16/7
15/8 तीसरा month, then 16/8 to 15/9, then 3 grace days, that is 16/9, 17/9 and 18/9. 3 days grace period. So the maturity date is 19th September. So everybody is getting this, है ना? ओके राइट नाउ अगर मंथ ऐसे दिया है तो ये तो हम कर सकते हैं, ऐसे करेंगे राइट। अगर डेज पे दिया है कैसे कैलकुलेट, डेट ऑफ बिल, वेरी नाइस डे, 14 September, 14 February 20, डेट ऑफ बिल 14 for 2020, it is for 90 days. मैच्योरिटी क्या होगा? यस टेल मी नीतीश, बताइए, कोई भी फॉर दैट मैटर बताइए। डेटा मेच्योरिटी बताइए। मई क्या है डेट? मई में कौन सा डेट है? जल्दी जल्दी 17th में राजेश, ओके एनीबॉडी एल्स? 18th में, 17th April 1705, anybody else? Ayyappa, what is the date? Good, everybody is telling, Nitish is also telling 17th May, 18th May, confusion. Let us, how many days are there? The date of bill should be included. Date of bill should be included. So 14 February से हम calculate करेंगे. So February में how many days are there in Feb? So in 2020, 29 days are there. 29 minus 14, 16 days in Feb, and March 31 days. August, sorry, March, April. Total is 77 days are over. 90 minus 77 days, 13 days. So 13 days. So 30 days are over with this. So 14, 15. So this will be our maturity date will be is there. Sorry, have to not 18, it is 17 because we have 29 days in the 13th June. I have calculated and shown here 90 days here. You total it will be becoming 90 days. It हो जाएगा 90 days plus 3 days. 14 for 14 से हम शुरू 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. तो ये 16 डेज है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 13 डेज इंक्लूड नहीं करना है, 29 डेज है, इसमें 13 डेज इंक्लूड नहीं करना, 29 minus 13, you get 16 days for the month of February, full March, full April,
और 13 days in May. ठीक है. So 3 days grace days are there, and 14, 15, 16 are the grace days. So 17th May is the date of maturity. Getting this? Any doubt in this? Any doubt in this? Are you getting this? Shivani, are you getting this? No, what is no? You are not getting Archana. एग्जाम में क्या होता है? और एग्जाम में फर्क में 29 डेज काउंट करना है क्या? हाँ, साल के हिसाब से देखना है. अगर लीप ईयर दिया है तो 29 डेज हम कैलकुलेट करना है. लीप ईयर आपको मालूम है कौन सा है लीप ईयर, है ना? वो लीप ईयर हो जाता है. ठीक है. सो लीप ईयर वी हैव टू कंसीडर 29 days. If it is not a leap year, then you have to consider 28 days. तो आप देखिए साल पे 29 days आ रहा है नहीं आ रहा है, 29 है या नहीं. ओके, राइट. नाउ लेट्स सी कितना फास्ट कौन करता है. सबसे पहले जो करता है उसका कुछ गिफ्ट मिलेगा. ठीक है. फाइन. डेट ऑफ बिल 30 April. Date of bill 13 June. And period 75 days. Calculate date of maturity. Yes. बताइए. Date of bill 13th May, and 75 days is the term of the bill. Term of the bill means period of the bill. तो बताइए क्या है आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी. 1 अगस्त, 18 अगस्त. इतना डिफरेंस, 70 डेज का डिफरेंस. 29 जुलाई. और एनी अदर आंसर? 30 जुलाई. 29 जुलाई. 30 जुलाई. Anybody else? Okay, right. नहीं, 51 minus 12 days. तो ये 12 days इंक्लूड नहीं करना, बाकी सारे हम इंक्लूड करना. 8 अगस्त. ओके. 41 minus 12 is 19 days in May. June 30 days. 49 days हो गया. 49 plus 30 79 हो जाएगा. So 49 minus 75, 26 days in July. So ये हो गया 75 days हो गया. And 27th July, 28th July, 29th July. 3 days grace period. Grace period. Therefore, what is the date of maturity? Date of maturity is 30th July. 30th July
22, not the 9th जुलाई, 27, 28, 29 कौन सही बताया? योगी सही बताया, कीर्ति भी सही बताया, नवनीत सही बताया, फिर बस बाकी सारे 29, 18 something. So 30th July is the right date. Locally सही. 13th May, date of bill is to be included. Date of bill is to be included. तो 13 को हम इंक्लूड करेंगे, 12 दिन नहीं होगा, तो 31 माइनस 12 किया, पहले भी वही किया था। बिल तो 14 था, 14 डेज था, पिछले वाला में 14 को रेस किया था। Date of bill is to be included. So we have raised on 13th May. So we are including 13th also. So how many days we are not including in May? 12 days we are not including out of 31 days. So 31 minus 12. How many days are there in May? 19 days are there. So because it is starting from 13th, so 13th is to be counted. 13th is to be included for calculating the maturity period. So include 13, so you get 12 days are not included, so 19 days are here for the month of May. June you have full June, and July 26 days, it makes 75 days. 3 days are grace period. So 27, 28, 29 are the grace period. The fourth day will be the data mature. Okay. Archana, are you getting? Archana has told me, sir, repeat. So, are you getting Archana? ओके राइट, अभी और एक प्रॉब्लम भी आप बताएंगे मुझे, एंड आई गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 6, डेट ऑफ बिल 31st March, period 120 days, एंड कर दीजिए मुझे डेट कितना, जल्दी जल्दी जल्दी। Date of bill is to be included. Date of bill is to be included. 1st August, 120 days. Maybe. Any other answer? 3rd August, 1st August. Any other answer? 5th August, 1st August, 2nd August. Chalo, okay. So first is March, 1 day. April, 30 days. May, 31 day. 31 days. And June, 30 days. तो कभी 92 days हो गया है, 120 minus 92, 28 days in July. 28 days in July. So 29 July, 30th July, 31st July. ये है 3 grace period है. Grace period 3 days. So date of maturity will be the
next date, that is 1st August 2020 is the date. This is the okay. So another thing, if the date of maturity falls on close holiday, already know, then date of maturity will be immediately working day immediately preceding to the date of maturity. Suppose ये पिछले केस के तहत था, 1st August was date of maturity 1st August. Suppose 1st August falls on Sunday, या कोई some known holidays आ जाए, ठीक है, otherwise we know that this is the day 15th August. 15th August is the maturity date. 15th August we know that 15th August is close holiday, it is Independence Day. तो क्या होगा, इसका प्रीवियस डे होगा, प्रीवियस डे नहीं, प्रीवियस वर्किंग डे होगा क्या, 14th August. Previous working day, that will be 14th August होगा, that is the previous working day is the maturity date. अगर ये 14th August भी Sunday है, 15th August Monday है, 14th August Sunday है, तो previous working day कौन सा हो जाता है, 13th August. 13. ठीक है, so we have to see previous working day क्या है करके देखना है. अगर known holidays आ गया है, then immediately preceding the day, immediately the working day immediately preceding to the maturity date. ठीक है, working day इसलिए दिया है, ठीक है. तो संडे तो वर्किंग डे नहीं होता है, तो वर्किंग डे होगा सैटरडे. बैंक का वर्किंग डे होगा तो सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे हॉलीडेज है, तो जो फ्राइडे है, that Friday will become the working day. So that you have to know. And second is, if data maturity also declared
holiday which was earlier not more than data. Maturity will be next day to next working day. Next working day. The date of maturity. तो आज न्यूज आया था, सुबह सुबह न्यूज आया था, रामविलास पासवान जी passed away. He is no more. तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, हॉलिडे डिक्लेयर करा है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर सपोज प्रेसिडेंट है अभी एंड वो मर गया, कोई प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट मर गया तो प्रेसिडेंट के लिए तो छुट्टी देता है, कोई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन इंडिया मर गया तो देन छुट्टी दे देता है. सो वैसे अननोन हॉलीडेज, suppose let's say some festival are based on the moons. Moon उस दिन आ रहा है, next day will be that type of festivals and all that. अगर ये particular day आपने पहले तो प्लान किया है ये फ्राइडे आएगा लेकिन फ्राइडे मून नहीं दिखा तो ये नेक्स्ट डे हो जाएगा, नॉट सैटरडे बी ऑन संडे, समथिंग लाइक दैट. आप पहले ही आप दिख गया. So the days are not decided unknown, then very next working day to the maturity date will be the क्या है डेट ऑफ मेच्योरिटी. ठीक है, अगर नॉन हॉलीडे से प्रीवियस डे हो जाता है और अन हॉलीडे से सडनली इट इज हैपन, देन नेक्स्ट वर्किंग डे बिकम्स द डेट ऑफ मेच्योरिटी. So these are things we supposed to know before this. हमारा बुक में भी straight away they have given only the entries are given for all, but straight away they have started with the accommodation, but I don't want to go that way. थोड़ा सा little bit आपको मैं समझा दूंगा what is what and all, then we can go for the rest. Okay, right. Okay. The method of maturity or method of settlement of the bill, let's say that, one is bill retype. Till the date of maturity. So this is one method. Second method is discounting of. And third method is endorsing. And fourth method, this is for dry. Sending. This is for collection. So these are the four different methods are there. And entries are given in your book, so I am not going to spend time on this. Straight away will be going for the problem. And you have to see your book. Last class में बताया था, please kindly आप go through कर लीजिए, then come for the classes. अभी भी आप entry अगर आपको कोई दिक्कत है बताइए, I'll tell you. But it is very simple. So hoping that you will get it. Let's go for this problem right now.
goes to B. On 1/1/2020 for rupees 1,02,000. ₹25,000. 25,000 immediately. So, equals for rupees 25,000. We home tax. Goes first. Use the second rule is credit. C. Okay. So this is the problem. They did not say what happened to the bill one. So the bill one is retained till the date of maturity. This is what we have to understand. Okay, and read the problem now. Here the problem is it goes like this. Mr. A sold goods to Mr. B on 1/1/2020 for rupees 1,02,000. Mr. B paid rupees 25,000 immediately and accepted three bills for rupees 25,000 each, being terms as 1 month, 4 months, and 3 months respectively. Mr. A endorsed the bill, second bill, to his creditor C for full settlement of 25,750, while bill 3 is discounted at 15% per annum with his bank. All the bills met on the due date. तो ये इसको कैसे करेंगे? Let's see. So first entry in the books of survey.
Okay, right. Debit is the drawer. Right. First entry is for sales. So 1/1/2020 entry आएगा 20 on debit sales. एक entry होगा 20 on debit sales. How much? 1,02,000. Cash received and raising bills. This is the second entry. Combined entry we can do it. Receiving of cash and raising of bills. Combined entry we can make it. What will be the entry? Bank account debit. Bills receivable on debit. Bills receivable to account debit. Bills receivable to account debit. To these account. You get 1,02,000. He is paying 25,000 immediately. Paying cash 25,000 immediately and raising three bills 25,000 each. And his account totally settled. So here, Diagonal discount amount. This is the balance. Okay. 1/1/20. Invoicing second. All these transactions are happening on the date of sales. Endorsing the second piece. What will be the entry? To whom it is endorsed? C. C is account debit. To this C is account debit. To bills receivable. To account. Bills receivable 2 is for how much? Bills receivable 2 is for 25,000. But how much we have to pay to C? 25,750 we have to pay to C. 25,750 we have to pay to C. So, discount receivable. How much? 750. We have to pay 25,000. So, second is one. Okay. Then 1/1/20 again discounting of what? इसके लिए एंट्री क्या आएगा? What will be the entry? Bills receivable side. Bank account debit. Bank account debit. Discount account debit. Two bills receivable. Here. 25,000. And how much
is the 14% per annum is the discount. So the discount will be 25,000 in the hand for 3 months because the bill period is 3 months. So कितना हो जाएगा ये 25,000 15%. So 937.5 you can count it as right as 938. Two zero 62. This is the amount. Okay. And first bill when it will mature? So bill 1, bill 2, bill 3. First bill raised on 1/1/2020 for 1 month. तो ये हो जाएगा first 1, 2, 3, 4th February 20. Second bill is also raised on this date, but it is for 2 months. 4th March 20. This is also raised on this one. This is 4th April 2020. This will be maturing. So हमारा maturity of bill 1. We are receiving the money, so bills receivable, sorry, bank account debit. Bank account debit. So bills receivable on account because you have retained the bill and you are getting the money. What is the entry for the bill to maturity? Entry for second bill, journal entry for second bill maturity, journal entry for third bill maturity. Please kindly jaldi banaiye and tell me what is answer. What is the entry for second bill maturity and third bill maturity? Who is going to tell me? Who is going to tell me? सेकंड तक की सेकंड बिल मेच्योरिटी नहीं होगा क्योंकि एंडोस तो एंडोस को तो पैसा तो देना है तो मेच्योरिटी तो होगा बिल और थर्ड बिल आई एम आस्किंग एंट्री इन द बुक ऑफ ए not B or C. I am asking the entries only in the book of A, the drawer. Bank account debit to no entry. That is Isha. एक भी no entry. कौन entry बनाया था? Entry किसका था? Somebody has made the entry. कौन बनाया था entry? सेकेंड बिल तो मैच्योरिटी डेट पे जो सेकेंड बिल इंडोर्स हुआ था वो तो फुल सेटलमेंट हो गया है तो इसलिए उसकी मैच्योरिटी बिल कैसे होगा? मैं एंट्री मैच्योरिटी का पूछ रहा हूँ इसका सही आंसर आप देना है
आंसर ये है, सेटलमेंट नहीं है, सेटलमेंट होता है ओनली ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। आप इंडोर्स किया है या आप डिस्काउंट किया है, मैच्योरिटी बिल का तो कोई चेंज नहीं होता है, मैच्योरिटी होता है ओनली ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी होता है, लेकिन कंफर्मेशन होता है सेटलमेंट का ऑन द डेट। कंफर्मेशन सेटलमेंट होता है ओनली ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सेटलमेंट नहीं होता है व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड और व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड, सेटलमेंट नहीं है वो, ठीक है। तो क्या है, एंड 4 मार्च 2020 maturity of second bill. The entry is this. क्या एंट्री है? नो एंट्री। रीजन क्या है? रीजन be on the date of maturity is CC। बस ये है, आप लिखना है। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एट प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। ये नहीं है सिंपली आप लिखने से मार्क नहीं मिलता है, नो एंट्री करके लिखने से मार्क नहीं मिलता। यू हैव टू राइट दिस maturity date bill, that you have to prove show that yes there is no entry here। रीजन आपका उसके साथ लिखना पड़ता है। लीडर जैसे मैं लिखा वैसे लिख सकता है, नहीं तो नीचे नोट करके आप लिख सकते। ओके, so you can write as a note or this way we can present it। Okay. Third, so 4th April 20, maturity of bill 3। क्या रीजन है, क्या है इसका रीजन, क्या है? On the date of maturity is therefore old। ये लिखना पड़ता है, ठीक है। नो एंट्री, इट इज राइट, बट दिस आर ऑल द थिंग्स यू आर सेइंग। सेटलमेंट होता है ओनली ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। कंफर्मेशन होता है, जब तक कंफर्म नहीं होता है वो सेटलमेंट नहीं है। आप तो दे दिया है, लेकिन उस दिन पे अगर डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? सेटलमेंट थोड़ी मानेंगे। तो सेटलमेंट नहीं होता है उस दिन पे, एक अरेंजमेंट है बस। दिस इज ओनली अरेंजमेंट। सो यू आर गिविंग द बिल टू हिम and whether the bill is settled or not, it will be confirmed on the date of maturity, ठीक है। right now in the books of second p, sorry, drawing, in the books of drawing, so he has to pay। जिसका पास डॉक्यूमेंट है उनको ये पैसा पे करना है, बस पे को पैसा पे करना है। nothing else much of no disturbance in his this one। so simple sa entries, date, yes, waiting for your number, debit, credit,
First is 1120 for purchase, you have to make the entry. Purchase account debit. Previous account. Second bill and cash. Same date. So here is account debit to bank account. 25,000. Bills payable for full bills payable. Full bills payable. Eight. So only three. This one. Receivable. Two. Discharge of bill one or payment of bill one, which we have like that. So bills payable one account debit to bank. Purchases are okay. Or bill two. Bills payable to account debit to bank. OPA plus discharging bill three. Bills payable three account debit. So we have done the entries in the books of drawee. Any doubt? Any doubt in this? Any doubt? कुछ नहीं clear. ठीक है. Right. Go for the books of C. Windows C. Windows bills receivable to account.
This is good to right? Discount allowed account. Please. 750. 750. For on maturity. Back account. This is it. So this is what we have to make it. Okay. I'm going to go for renewal of any doubt is no, because you have been doing this for ages. अब तो बहुत पहले से ये करते करते आ रहा है. Should not be any problem. कोई डाउट होगा तो पूछिए. Any one of you. आगे बढ़ूं. Okay. Right. Events maturing on
ठीक है, but this problem, and this is the examination problem. ठीक है, you can check your scanner. So this problem has been asked in the examination. ठीक है, इसमें क्या है, renewal भी है और dishonor भी है. Dishonor with insolvency, renewal, dishonor, insolvency, ये सारे मिलकर हैं. So this type of problem we can expect in the examination. तो ये कैसे करना, how we have to do it. Noted this problem? हाँ जी, of course, ये तो आपका PDF तो आ जाएगा इसका क्लास के बाद. Let's do this. इसे होता है. Who is going to tell me which is the date of maturity for the bill? 42 days का बिल है, 1/7/2020 बिल रेस हुआ. डेट ऑफ मैच्योरिटी मुझे बताइए. 42 डेज का बिल है. अगस्त, बट इट इज अ हॉलीडे, सो 16 अगस्त को ये हो जाएगा. नहीं यार, नॉन हॉलीडे 15 अगस्त तो सबका मालूम है ना. तो ये नॉन हॉलीडे है. नेक्स्ट वर्किंग डे होगा जब आपका सडनली कुछ हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, कोई प्रेसिडेंट बन गया. या सॉरी 14 अगस्त 14. ये 14 अगस्त को ये नॉन हॉलीडे है, सो प्रीवियस वर्किंग डे होगा. सो आई होपफुली 14 अगस्त इज नॉट संडे. चेक कर लो, 14 अगस्त संडे तो नहीं है ना. आपका कैलेंडर पे चेक कर लो, 14 अगस्त विच डेट. फोर्टीन अगस्त कौन सा डे? फ्राइडे. फ्राइडे, ठीक, वर्किंग डे. particulars, particular number. In the books of history. Right. So on 1/7/2020, racing bill racing of bill. So bills receivable account debit. So lease account. How much is the amount? Amount is 1 lakh. Discounting of bank account. Discount account debit. Two bills received. यहाँ होगा 1 lakh 18/100.
14 by, sorry, 42 upon 366. तो इंटरेस्ट आ रहा है 2065 2066 2066 on that minus 2036 is 97%, 900. सर हम 365 डेज भी ले सकते हैं ना? ओके 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 ओके। माइक म्यूट हो गया। Okay, जी 14/7/2020 now renewal of bill का पहले cancellation of bill होगा payment to bank because B is not going to pay it, now you have to pay it. Go to the bank, you have to make the payment. Okay, so what is the entry? And you are making the payment on behalf of B. Payment to bank is nothing but and cancellation, renewal of cancellation of it. Payment to bank and cancellation of bill. This will be B's account debit bank account. So now you have to pay to bank 1 lakh rupees. You are making the payment. इसके बाद क्या है due for interest. Interest, this interest is income for you. This interest is income for you. So what will be the entry? Is account debit. Interest is to be credited because income for you. Interest on 1 lakh, 18% for 3 months because you are renewing the bill for 3 months. तो ये हो गया है 4500. Pricing, new bill. All these things will happen.
So what will be the entry? This entry raising new bill, bills receivable account. So you're receiving cash, that is also receiving cash for the interest. Receiving interest. On these account. Up to 100. And raising new bill. Bills receivable account. Two. This account. How much? It's for one. Endorsing. This bill was endorsed. This account. Bills receivable account. Same date. So the new bill was raised. It was not endorsed. Before interest, immediately for the balance bill was raised. Before the maturity, B has become insolvent and need. यहाँ कोई endorsement नहीं है sorry. Tell me which is the date of maturity कौन सा? Date of maturity we have to consider the 14th onwards. 14 से हम 14th of August. हाँ जी 14 से हम काउंट करना है. So 14, 15, 16, 17 तीन महीने क्या है ना? So 17th October 20. Constitution. Installments. So installment होगी so bill हम cancel करना है. Please account bills receivable. Never write dishonor क्योंकि अगर ड्राई को कैपेबिलिटी है एंड इफ इज नॉट मेकिंग द पेमेंट तब हम उसको बोलता है डिसऑनर. ये ड्राई का कैपेबिलिटी नहीं है. कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कंगाल हो गया बी तो वो पे नहीं करेगा. सो वी हैव टू से दैट कैंसिलेशन ऑफ बिल नॉट डिसऑनरिंग द बिल ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है. बिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है ऑन द ड्रॉई बिकमिंग इंसॉल्वेंट. ठीक है. So don't write cancellation of bill or dishonoring or something like that. Dishonor bill हो नहीं सकता है क्योंकि bill becomes void before it is getting mature. ठीक है. तो फिर dishonor नहीं होगा. कैंसिल करना पड़ता है. 17, 10 receiving final payment. Will be the entry receiving final payment, bank account debit, bad debt account debit, to lease account.
सर ऑडियो फिर से म्यूट हो गई। So you are getting 40 पैसे इन रुपी, इसका मतलब आपको 40% मिलता है। 40 पैसे इन रुपी का मतलब क्या है? एक रुपये में कितना पैसा है? 100 पैसा है। तो 40 पैसे इन रुपी मीन्स 40 paisa in 100 out of 100 cases, मतलब 40% you are getting the money, balance you will not get it. That has become the bad debt. So 60% has become bad debt, 40% you are getting, 40% of total due is loss. So 60,000 has become bad debt, total. So these are the entries in the books of dry. So ये सब आपको मालूम है मेरे ख्याल से, but these are things are not there in your book at all. ये नहीं दिया, सीधे they have gone for the accommodation of bill. So for the, but these persons are asked in the examination. These persons are not there in your study material. Straight away they gone for the accommodation of bill. But this type of problems has been very often asked in the examination. So I thought, okay, right, let me remind you all these things. Then I can go for the accommodation. Right. Now in the books of. Is there any doubt for anyone? Whatever we have done in this problem, any doubt? Any one of you? Any doubt in these entries? सर बोलिए। सर मेच्योरिटी डेट तो सर 42 डेज की थी ना। हाँ जी। 1 जुलाई से सर लिया था तो 42 डेज, और जब मेच्योरिटी डेट था सर हमारा 14 अगस्त हो गया। हाँ सर जो लाइन है ऑन द मेच्योरिटी डेट बी रिक्वेस्टेड टू ए रिन्यू द बिल, तो सर हम जो बिल हम रिन्यू करेंगे सर वो तो 14 अगस्त से करेंगे ना। हाँ जी, 14 अगस्त ही किया था। सर 4 अच्छा जुलाई से किया है। अच्छा 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 अच्छा, ये मेरा गलती है, ठीक है, सॉरी। ये होगा पेमेंट टू बैंक, ये भी 14/8 होगा सर, गलती हो गया। ये है 14, this will be 3 months will be 11 September, नवंबर। October. Thank you. Any थैंक doubt? यू सर। It is mistake I have done. You have enlightened me. Thank you for identifying the mistake. Thank you very much. थैंक यू सर। Any other doubt? Which means, right, I am proceeding further in the books of B. Roy. बुक पे तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होता। Eight, okay, now let's go for this. First is accepting bill. Accepting bill 1713. ये से from debit.
bills payable on and 47 cancellation of ऐसे उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, bills payable of debit is same date 48. Due for interest. Interest is payable by him, so it is an interest is expense for him, so we have to debit interest account. Yes, how much? We calculated was 066. 2,500. 4,500. Payment of interest. Will be the entry interest account debit. Interest account. Is account debit to bank. 4,500. Accepting new bill. And is account debit to bills payable. This is on 14. On the date of maturity, bill becomes void. So 17, 11, 20. Cancellation of bill. Bills payable on debit. Yes. Now final settlement. Is account debit to bank account. Deficiency. So these are the entries will be coming in the books of drawing. Read out. Any doubt? Respond please. आप response नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. Okay. 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 Right. Now we are going for इसको क्या बोलते हैं? Retirement of bill.
अगर बिल को बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी सेटल करेगा तो देन वी कॉल इट एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। मैच्योरिटी डेट पे पहले सेटलमेंट हो गया है तो वी कॉल इट एज द रिटायरमेंट ऑफ बिल। जब भी कोई किसी को आप 1 लाख को सेल्स कर रहा है, अगर कैश पे करेगा तो 1 लाख आप उनसे चार्ज करेंगे। यू विल बी चार्जिंग after the class, end of the class, I'll tell you. सिंपल है, जब कोई दीवार कोई इंसॉल्वेंट करके कोर्ट डिक्लेयर करता है, इंसॉल्वेंट को कोर्ट डिक्लेयर करता है। जब कोर्ट पे डिक्लेयर करता है वो सारे एसेट्स सब कुछ उनको जमा करना पड़ता है कोर्ट पे। ऑल द एसेट्स, ऑल द लायबिलिटी, वो स्टेटमेंट को सबमिट करना पड़ता है। अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड इफ दे डिक्लेयर दैट पर्सन इज इंसॉल्वेंट, ही इज रिलीव्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटीज, तो उस समय पे लीगली जो भी पे करना है वो तो वाइड हो जाता है, वो बिल वाइड हो जाता है। बिल का कोई वैल्यू नहीं होता है, बिल वैल्यूलेस हो जाता है। जब कोर्ट डिक्लेयर करता है एक कंगाल हो गया है तो उनसे कोई भी पैसा ले नहीं सकता है। सो जो बिल आपने रेज किया है वो बिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। डिसऑनर होता है जब उनका पास कैपेबिलिटी है पे करने के लिए, आप उनको कोर्ट ले जा सकता है, तब बिल को डिसऑनर होता है। लेकिन जब कोर्ट ही डिक्लेयर कर दिया उनका पास कोई पैसा नहीं है, उनसे कोई भी नहीं लेगा, वो इंसॉल्वेंट है, तो बिल ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाता है, ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, उसको कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, इट डजंट हैव एनी वैल्यू, लीगली ही इज परमिटेड नॉट टू पे एनी अमाउंट, तो वो बिल वो डिसऑनर नहीं, वो तो कैंसिलेशन करना पड़ता है। दैट इज द मीनिंग। प्लीज समझ में आ रहा है तमन्ना जी? गेटिंग? ओके जी, आगे बढ़ो। चलो राइट, अगर आप सेल्स कर रहे हैं किसी को, इमीडिएटली आपको पैसा मिल रहा है, आप 1 लाख में बेच रहे हैं, इमीडिएटली पैसा नहीं मिलेगा, आपको 3 महीने के बाद मिलेगा। क्या करेंगे? 1 लाख प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड करके, 3 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड करके आप पे करेंगे। सपोज लेट्स से एट द रेट ऑफ 12% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 3 महीने के लिए 1 लाख प्लस 3,000 इज द इंटरेस्ट फॉर 3 months, टोटल बिल्स रेज करेंगे आप 1,03,000। Supposing you pay it end of the second month, सेकेंड मंथ का एंड पे पे कर लिया, तो क्या होगा? आप 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया है, अभी इसको ये इंटरेस्ट को कम करना है। 3 महीने के लिए था, 2 महीने के इतना है, तो 1,000 आपको कम करके देगा, जो ड्राई है 1,000 को कम करके देगा। तो दिस वी कॉल इट एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। जब बिल ड्यू डेट के पहले सेटलमेंट हो जाता है, then we call that as a retirement of bill. Okay, so this bill is settled before the date of maturity by the joint. Say that this bill is retired. एंट्री क्या होगा? एंट्री
So, weight upon debit. इसमें आएगा bills payable account to debit bank to rebate. इनके लिए इनकम एड्रॉय के लिए 1 महीने का इंटरेस्ट बच जाता है फॉर द ड्रॉयर 1 मंथ इंटरेस्ट की लूसेस तो एंट्री ऐसे आएगी सो paper maturity 1 right 1% bill amount bill value is on Roy Ram. This is homework for you to complete it in the next class. In detail, we'll be seeing the bills of exchange accommodation of bill. The most important one chapter this one 10 marks person guaranteed. और December exam 10 mark guaranteed person will be getting बिल्कुल कोई confusion नहीं होगा सिर्फ entries होगा if you get if you understand this then everything will be very simple okay तो आपका 10 mark का simple सा chapter है so you should do this and I'll advise जितना बार भी आप इसको practice कर रहे हैं जो problems scanner में है and study material and the problem जो मैं दिया हूँ उसको जितना भी है प्रैक्टिस कर लीजिए 2016 दिसंबर के मतलब 2017 जून से जो भी आपका स्कैनर में प्रॉब्लम है उसको कर लीजिए स्टडी मटेरियल का प्रॉब्लम कर लीजिए एक दो प्रॉब्लम हमारा जो नोट्स में है मेरा नोट्स तो इस पे कर लीजिए एंड पक्का यू विल बी गेटिंग अकोमोडेशन बिल नेक्स्ट क्लास पे हम कर लेंगे एनी डाउट नाउ टुडेस क्लास एनी वन ऑफ यू हाँ जी any doubt any one of you
No. No. 3 no. बाकी के लिए 27 पीपल। अच्छा, दो तो छोड़ के भी जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। See you. Namaste. We'll meet in the next class on next Monday. We will be completing and we'll be starting a new chapter in the next class. We'll be doing the first part, we'll be doing the accommodation of bill. The second part, we will be starting with the new chapter. Namaste. See you. Good day.